वेलकम बैक टू आवर लीगल मैटर्स। कानूनी मशवरे आपसे ये पहले प्रोग्राम से पहले ये डिस्कशन हो रहा था। एनीथिंग रिगार्डिंग इमिग्रेशन, लिटिगेशन, representation, we'll be more than happy to take calls and emails as well. It could be family law, commercial, debt recovery, employment, property or any other issue. जी शायद साहब, अभी हम ये प्रोग्राम से पहले डिस्कस ये कर रहे थे NHS टूरिज्म, मगर उससे पहले एक कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ मैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने एक सवाल करना था। मेरे हस्बैंड ने दिसंबर में IMRAN के लिए अप्लाई करना है और मैं उनकी डिपेंडेंट हूँ। मैं चूंकि 2009 में आई थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उनको IMRAN मिल जाएगा तो मुझे स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करना होगा या स्पाउस वीजे के बाद मिलने के बाद डायरेक्ट इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना होगा? जी क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आप 2 साल पहले ही पूरे कर चुकी हुई हैं। ओके, आप ये बताएंगी, आप अपना नाम बताएंगी पहले? जी सिद्रा रहीला। ठीक है, ओके ठीक है। स्पाउस वीज़ा के थैंक यू। वॉच करें प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में जवाब मिलेगा। शाहिद साहब, ऑब्वियसली दिस NHS टूरिज्म जो उन्होंने लेबल करा था होम ऑफिस ने, या एंड that is not, अभी तो इफेक्ट नहीं हुआ है ना, it's not coming to place yet. The government has been looking at number of policies, to stop the flow of money, which is, I mean, it's NHS immigration is always a political hot potato, so they're trying to marry the two and saying that A, there are illegal people, and secondly they are abusing our system, they're putting strain on our system. So what we're going to do is we're going to get immigrants who are here on different visa schemes, different visas, to actually contribute towards their NHS treatment. So that's what the proposal is. So the idea is that because they're using it, they want people to pay for it. Basically, I mean, in the past there were people coming from like African countries, Ghana, Nigeria, heavily pregnant women. They'll come, they have their babies here and then go back. Shaykh sahab, call aa rahi hai, shamil karte hain, come back to you. Ji, hello. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Kaun kahan se? My name is Ahmed. Thank you, Mr. Ahmed. Welcome to the program. I just want to ask you one question. I've got my indefinite leave in 2011 under legacy. I just want to know, can I apply for the naturalization now or after 5 years? When did you get your ILR? कब मिला था आपको legacy में? I got my ILR in 2011. I came here in 2005. I was child. And then they gave me discretionary leave for 1 year. Then after 1 year they refused my application. Then I applied again and they said my case is under the legacy. Then they said I will have to wait 5 years. Within 5 years they will clear my case. Then I got my letter in 2011. They gave me indefinite leave straight away. ठीक है. Okay. Can I apply now for the naturalization? Or do I have to wait? ठीक है, we've got your question. Thank you very much for that. Just some information. Do you have children as well? जी वो कॉल चली गई, कोई बात नहीं। एक और कॉल आने से शामिल करते हैं। हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं सना बात कर रही हूँ लंदन से। जी सना बहन, आप बताएं क्वेश्चन अपना बताएं। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे हूँ, मेरे हस्बैंड साथ हैं, मेरा एक बेटा है और मुझे यहाँ पर 3 इयर्स हो गए हैं। तो मुझे ये पूछना था कि मैंने काफी लोगों से सुना है कि अगर 7 इयर्स हम यहाँ पे गुजार लेते हैं तो इस बिहाफ पे मैं अपने बेटे के बिहाफ पे एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकती हूँ। अब मुझे ये बात पूछनी थी कि वो बच्चा तो पाकिस्तान में बॉर्न हुआ है, तो उसको अगर यहाँ पर 7 इयर्स हो जाएंगे, अभी वो 6 इयर्स का है, तो जब यहाँ पे मुझे टोटल 7 इयर्स हो जाएंगे तो क्या मैं भी एप्लीकेशन उसमें आती हूँ या नहीं आती हूँ? और अगर मेरा स्टेटस लीगल है या इलीगल है तो भी मैं वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमने होम ऑफिस में, मैंने अपने स्टूडेंट वीजा मेरे पास अभी 1.5 साल का है और मैंने दूसरी एप्लीकेशन कॉलेज में डाल दिया है, नया केस मतलब नया कैश लगा के मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर मैं करना चाहती हूँ, मेरे पास अभी पहले वाला 1.5 साल का वीजा रहता है
और मैं दोबारा अप्लाई कर दिया मैंने, और अगर मैं विड्रॉ करूं तो मेरा पहले वाला वीजा एग्जिस्ट करेगा या वो खत्म हो जाएगा या क्या है, ये प्लीज आप मुझे बता दें। और बायोमेट्रिक्स जो हैं वो कितनी दफा तक हम अगर ना दें तो वो आते रहते हैं, 1 दफा 2 दफा या 3 दफा। प्लीज जरा मुझे जवाब तफसीलन दे दीजिएगा, और खासतौर पे ये बच्चों के बारे में ना कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ कि नहीं। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सना, थैंक यू। आपका क्वेश्चन हमें मिल चुका है, थैंक यू। शाहिद साहब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उससे पहले बस यही बात करना चाह रहे। Obviously these are very important new changes आ चुके हैं। The Life in UK test has now come about, is compulsory, has to be done for English language test, B1 NGOE, and this is going to be compulsory for naturalization. But let's just go, अभी थोड़े से questions के जवाब दे दें because time की वजह से मैं उसका भी in mind में हूँ। खान साहब की जो कॉल आई थी, Mr. Khan called about tenant है, he's a tenant, and rent के बारे में वो कह रहे थे weekly and fortnightly, उनका किराया आता है। Now I don't see any issue with that, आप थोड़ा सा इस पे बात करें। हाँ, इनको मैं यही बताना ज़रूरी समझूंगा कि आपका जो रेंट आता है ना काउंसिल से, वो अरियर्स में आता है, लेकिन अगर आप अपनी टेनेंसी को ज़रा क्लोजली स्टडी करें या देखें तो टेनेंसी नॉर्मली जो है वो रन होती है 1st of every month। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज इज़ द केस, बट जो भी आपकी टेनेंसी पे डेट डली हुई है, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट इज़ द रेंट ड्यू। तो अगर आपकी टेनेंसी पे लिखा हुआ है कि रेंट इज़ ड्यू ऑन द 1st और आपका आता है 28 को रेंट, और आप कहते हैं जी मेरा तो 28 को आया इसलिए मैं आपको 28 को दे रहा हूँ, तो टेक्निकली यू आर इन ब्रीच ऑफ योर terms and condition of your tenancy. So that's what the housing association has been pointing out to you quite correctly, but it's very easy to rectify that। कि अगर आपको पता है कि आपको रेंट 28 को आना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना रेंट जो है 1st को स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट से सेट कर लें, और वो जो पैसे आप अपनी पॉकेट से देंगे वो आपको 28 को वापस मिल जाएंगे। सो इन दैट वे यू वॉन्ट बी इन ब्रीच ऑफ योर टेनेंसी टर्म्स एंड कंडीशन एज फार एज द रेंट इज़ कंसर्न। और आपने कहा कि वो आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं। Just back on the rent one, अगर association चाहे, if it goes into 2 months in arrears, they can ask for direct to be paid to the obviously if the landlord, if social housing जो होते हैं। Each borough, each council has different rules, but generally, you know, if you are in 2 months in arrears, then the landlord or social landlord in your case can request the council to pay the rent directly to them. What about this John, the second part, the right to buy? This is a right to buy scheme now. Right to buy, yeah, you're quite correct to say that under certain housing associations or council properties, after you have lived in that property for a number of years, then you are entitled to actually buy that property at a discount. Okay, so if मगर इनके rent arrears वो कह रहे थे ना काफी हो चुके हैं। Obviously the housing association has put an objection to that, and their grounds are that you are in rent arrears, but they've also stated that if you were to bring your rent arrears up to date, then they won't have any objection for you to exercise your right to buy the house. ठीक है, शायद सब कॉल आ रही से शामिल करते हैं, फिर आपके पास चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी आप अपना नाम बताएंगी सिस्टर? जी मेरा नाम ज़ारा है। ओके, क्वेश्चन बताएंगी ज़ारा बहन? जी मैंने पूछना था कि जो 18,000 जो कह रहे हैं लो है, वो पाकिस्तान से हम किसको बुला रहे हैं, तो वो क्या चेंज होगा कि नहीं, आगे की 18,000 ही रहेगा? ठीक है, ओके, शुक्रिया आपका क्वेश्चन का। We'll come back to them questions and answers in a minute. तो ये तो खान साहब का आप जो बता रहे थे अभी, obviously if he brings his rent arrears up to date, then he can buy it, go back and go to the scheme of right to buy. ठीक है। Is there anything else खान साहब को बताने के? I mean, what he's asked us, you know, I mean that actually is. बाकी तो obviously we haven't got his details. खान साहब के अगर if you do need, अगर आप बात करना चाहें off air हमारी details ले सकते हैं, we'll be more than happy to help you. और जो कॉल आई थी अपनी लुबना सिस्टर कॉल्ड एंड जुडिशियल रिव्यू 11th जनवरी को इन्होंने अप्लाई किया है, तो अभी वो पूछ रही थी इनका अभी कोई लेटर वगैरह या कोई डिसीजन नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया, तो इनको यही बताएंगे कि अभी जो है ना टू अर्ली है। ऑब्वियसली ईच केस
is dealt on the merit of the case. So we don't know how complex or complicated your case is. So the judges will take their time. You can't actually, there isn't a fixed minimum period, set period कि जी 3 months में आपको आंसर मिल जाना चाहिए, 6 months में. You know, it depends on the nature of the case and the complexities involved. Sure. So I mean, as a general rule, you know, if I can put it that way, you know, you got to wait at least 6 months. 6 months, yeah. But वो लुबना बहन ये भी कर सकती हैं, अपने जो वकील हैं उनसे पूछ सकते हैं, एक लेटर भेजें just to find out where they're up to. Yeah, you know, yeah, like a काफी time status update. Status update जिसे कहते हैं. अच्छा जो उनका 7-year rule for children जो था, शायद obviously this is 2.5 years के इनको मिलता है, and then another 2.5 years. जी हाँ, अब लोगों को मैं थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन है कि अगर आप 7 years के बाद अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस को आपको इंडेफिनेट देना ही देना है. ठीक है, होम ऑफिस का स्टांस ये है कि ठीक है आपने अप्लाई किया है एंड ऑब्वियसली देयर आर rules and parameters in which you are entitled to regularize your status here on the grounds that your children have been here for 7 years and longer. Now what the Home Office normally does is that they give you discretionary leave for 2.5 years, and this is exactly what's happened in this case as well. And what you are supposed to do is that obviously with the passage of time, as the time goes on, your roots or your life in UK becomes even more established and more stronger. तो आपको इससे कोई डरने की बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ 2.5 years का दिया, उसके बाद वो ये नहीं कि आपका वो वीज़ा रिवोक हो जाएगा और आपको कहेंगे आप वापस चले जाएं. तो दिस इज़ जस्ट द पॉलिसी स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन जब आपके 10 years पूरे हो जाते हैं, then you can actually apply for ILR indefinitely in those circumstances. So basically लुबना बहन को ये पता होगा 10 years, 2.5 years आपके concurrent जाएगी, उसके बाद 10 years के जैसे शायद साहब ने बताया, then you can apply for the indefinite leave to remain आपको फिर कर सकते हैं. और जो अमजद साहब का था लंदन से जो कॉल थी entrepreneurial and अमजद साहब किसी के बिहाफ पे फ़ोन कर रहे थे, उनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड हैं जिनका बिज़नेस है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहते हैं. तो अमजद साहब को यही बताना ज़रूरी समझेंगे कि देयर आर 2 options. वन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आपके फ्रेंड का जो माशाल्लाह से अच्छा बिज़नेस है ओवरसीज़ एंड इफ़ ही कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट £1 million, then he is entitled to come along with his family to live here. There is no other requirements. You don't have to be able to speak English. You don't even have to do anything, any business activity. That's it. You come, you are issued a visa, and then after ये जो visa is going to be an investor's visa. Investor's visa, yeah. तो for ये 1 million, yeah. Basically you are loaning that money to the government, okay, and you get that money back after 5 years. Option 2, which will be option 2 is entrepreneur visa. You know, basically the government is looking for business people to come over here and to invest their money, resources, time and expertise to generate economic activity and employment. So there is definitely a route open to your friend if he wants to exercise that route. Under those circumstances, you would be expected to buy a business for at least £200,000, or you could start a business from scratch, but again the criteria is that you got to have minimum of £200,000 invested. शायद साहब ये ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरल की बात आप कर रहे थे, अमजद साहब को मिला होगा इसका जवाब. अमजद साहब आप प्रोग्राम देख रहे हो और इस तरह के अगर कोई और अपनी कैटेगरी में इस तरह के लोग होंगे who may be considering, students भी हो सकते हैं, they want to be considering entrepreneurial, then please contact us. We can help you in this matter. आपको बता सकते हैं क्या आपके options हैं, how to do and how's the best way to resolve this issue. और जो दूसरे हमारी जो कॉल आई थी रहीला की, she's talking about the dependent spouse visa के बारे में. जी वो कह रही थी कि उनको ILR के लिए अप्लाई कब करना है. तो जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी बताया कि नॉर्मली you have to be living here lawfully for 5 years before you can apply for ILR. So that is the answer for your question. Yeah, so रहीला बहन को मिल गया होगा जवाब. जो MS साहब का था ILR उनको मिल चुकी थी under legacy 2011 naturalization he was talking about. जी हाँ, again अब वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. 2011 में उनको ILR मिल गया था. So you need to basically wait for 12 months after you've had your ILR. तो अभी we are in 2014, so you have gone past the restriction
Sure. Okay? 2014. The only thing is that you do need to pass English language B1 and life in UK test. That's compulsory. That's compulsory now. ठीक है और सना बहन की जो कॉल थी student visa, it's got a child, it's been here 3 years, 7-year rule के बारे में. I mean इनका there are a number of issues. Yeah, well, let's just go student visa first. Yeah. इनका breakdown करते हैं थोड़ा सा इस तरह करके. I mean student visa, she's still on a student visa. She's got a leave for 1.5 years. She's applied for CAS, you know, and then she's thinking about retracting her application and asking if the existing one would still be valid. The visa will be valid. I mean, the thing is that, you know, if you have submitted a CAS application to Home Office, then you're saying basically your previous course has come to an end, or you do no longer wish to continue with it. So basically the Home Office will be questioning your credibility and intention, that अगर आपका ये काम नहीं हुआ तो आप फिर दोबारा जाना चाहती हैं. They will be questioning, are you really a genuine student, you know? So you got to be very careful in terms of what you do. You need good sound legal advice. Don't make any hasty decisions, you know, because it can backfire on you. Yeah, उनका बच्चा is 6 years of age now. We're getting the, you know. Yeah, 6 years का है. I mean वो जाना चाह रही थी. वो 7-year rules का जो है ना, again I think she knows a little bit about it, but obviously not a lot of in-depth knowledge. 7 years का ये है कि वो बच्चा जो है उसको 7 साल इधर हो गए हैं, ठीक है. तो आपका जब बेटा इधर आया तो he was already I think about a year or 2 years, I don't know. Something like so in those circumstances you have to spend more than 7 years, and the fact that whether you are legal or illegal doesn't have any bearing on the application. Sure. Okay. Again, basically, सना बहन अगर आप watch करें ना program, तो आप हमें ज़रूर contact करें. We can help you. This is आपके ज़रा complex हैं ये issues. It's not straightforward, and we'll be more than happy to help you and guide you. Obviously, इस वक्त program में आपको guidance दे रही है. आप इसे seriously चीज़ों को note करें, and hopefully इंशाल्लाह कोई competent solicitor या आपका legal advisor आपको बताएगा इस आपके issues के बारे में. और जो Zara की call आई थी from Manchester, I think the 18,600 is still the stance, is no change, or there's no eminent change in that at the moment. So unfortunately, आपको पता चल गया होगा अभी ये changes के बारे में चल रहा है. Nothing's concretely come out. It's still 18,600 for spouse visa. शायद ये तो calls हैं. Obviously we're still taking calls, a number of calls who were coming through. मगर time हमारा बहुत short हो रहा है because of the obviously the hour goes too fast. आपसे यही बात करना थी. Obviously we were talking about the capita enforcement जो दिन the UKB board agency ने जिनको रखा हुआ है to carry out their enforcement. Raid जो करते हैं, raiding करते हैं. Let's just talk about that a little bit. जैसे कोई kebab shop में काम कर रहे हैं. A lot of these people. The report was saying a lot of the entries by Capita Enforcement UKB Board Agency has been noted as not been compliant. That's right, yeah. Obviously, Capita is not part of government or UKBA agency. They are an independent external company. It is a business, and basically they have won a tender from the government to actually carry out their enforcement policy. So they are under time pressures, and obviously the standard and the criteria they are expected to meet could fall short, because obviously they are there not only to actually enforce the government or the UK border policy on deportation and removal, but obviously they want to do it in as short a time or as minimum of their effort and resources, so they can maximize their profits. So obviously that's why people in the general public have been getting text messages as opposed to formal letters, because obviously a text costs nothing, whereas if they have to get a secretary to write a letter, then it increases their overheads. So the point I'm trying to get across to the viewers is that Capita is a business. It has won a contract from UKBA to actually enforce the deportation rules and policies of the government. So basically they are under severely being criticised. I've been report में तो ये criticism हुआ है.
that almost about 1/3 has been criticised the way they've handled the enforcement, and they said they're breaching their own rules. So something if you feel there's somebody in that similar category, जहाँ पे आपका कोई business हो or anything like that, तो आप इस raise कर सकते हैं issue. Don't think that we cannot raise this. आपके MPs बैठे हैं, आपके अपने local councillors बैठे हैं, and you can bring this to their notice where you feel, अगर आप feel करते हैं they've been unjustified. That is your prerogative. So use that. So again, we're going to encourage people to do that. हमने last time भी ये issues उठा चुके थे. शायद obviously we're running out of time, but हमने domestic violence के बारे में discuss करना था. And just touch on that because next week program we are going to be talking about domestic violence. I mean domestic violence के बारे में briefly मैं यही बताना ज़रूरी समझूंगा कि normally जब आप इधर spouse visa पे आते हैं तो एक criteria जो होम ऑफिस यूज़ करता है वो ये है कि आपका जो है genuine and subsisting relationship है. तो if you are in an abusive relationship and you want to get out of it, that means that marriage is not there. So the government actually does recognize that not all marriages work out the way they're supposed to, but obviously where there is abuse, violence, then that factor ought not to be the only factor which then forces you out of the country where it is no fault of your own. So that's why there is a separate category for domestic violence victims. We're going to talk about that. इससे थोड़ा discuss करेंगे domestic violence. अगर कोई इस situation में है and they feel that आपको कोई redress करना इस बारे में आप उठाना चाहते हैं questions या आप क्या करें तो please आप हमसे contact करें. हम आपको बहुत सारे advice दे सकते हैं, आपका help कर सकते हैं regarding your DV जो application domestic violence with Home Office. शायद we are going to talk about this मगर इससे पहले थोड़ा सा ये भी discuss कर रहे थे entrepreneurial visa. We talked about tier 2 जो general होता है. इसका again इसका थोड़ा सा revise उनकी figures हो गए हैं वो expectation of salary थोड़ा सा ये बताते रहे from 20,000 from April of this month, which is just started, the minimum salary requirement has gone up from 20,300 to 20,500. That's what you would be expected to earn if you are on a tier 2 visa. ठीक है. Obviously शायद ये जो ये tier 2 guide people in that situation they have to be of that salary now. This is expected. This is expected, yeah. And obviously minimum. This is going to go for 3 years. That's right. 10 years go there and then extended. That's right, yeah. For another 2 years. That's right, yeah. And then they can apply for the ILR. So आप थोड़ा सा बताएं anybody in this category जो है who wants to इस situation में आना चाहेगा obviously they need to get a letter from employer. Yeah, I mean, and a switch करना चाहिए. The employer needs to have a certificate of sponsorship that is it CAS कहते हैं? Yeah, CAS. Yeah, certificate of sponsorship that they are actually registered with the UKBA to be able to offer jobs to people from abroad. Sure. Yeah. And these are licensed, Jordan. They're on the category of the UKBA Board Agency. So yeah, आम बनते हैं उनका already UKBA Board Agency के पास उनकी details होती हैं. So they do check these things out. So obviously we can help them. Switching होते हैं जो बंदे students होंगे हम उनको भी encourage करेंगे. If they're in that situation, they want to go to tier 2, we can help them. Yeah, हम उनको support कर सकते हैं इसके बारे में. Elaborate a little bit. The viewers probably know that post-study work visa have been phased out. Okay. So obviously the people who were the last batch of people who were issued with post-study work visa. So what are the options open to you? I mean, you can go back to your country, but obviously this is not what a lot of the people want. Then the only legal option open to you is to actually then switch to either tier 2 general, where somebody offers you a job. If that is not forthcoming, then you have to maybe look at entrepreneur visa, where you can form a business with another partner. You could either contribute £100,000 each, or you could get a venture capital company which is actually approved and registered with Financial Services Authority. And if that company then offers to invest 50,000 of their capital into your business, then that also entitles you to apply for entrepreneur visa.
So basically they can do this. Is a situation अगर आप हैं student visa पे हैं and you want to consider these options of obviously we have आपको थोड़ा सा हमने डिस्कस करा यहाँ पे obviously हम आपको हेल्प करना चाहते हैं आपको इस पे और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जैसे शाहिद साहब ने भी मेंशन करा था and this is not easy is ये complex issues होते हैं आपको you have to get it right so that ये कोई आप गलती नहीं करें so obviously speak to the solicitor or legal advice ज़रूर लें आप or if you want to contact us we'll be more than happy to help you. Shall we're running out basically to completely run out of time now and obviously we'll be here discussing the legal issues. Views से ये कहेंगे तो आपकी बहुत सारी कॉलें आ रही थी we couldn't take the calls do apologize because time again beats us to this program. अगर आप चाहते हैं हमसे ऑफ एयर कॉन्टैक्ट करना है आप हमारी डिटेल्स ले सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली कंट्रोल रूम और टीवी पे भी आ रहा था आपको कोई मसला नहीं हमें कॉन्टैक्ट करने के आपसे यही कहेंगे दैट वी विल ब्रिंग यू न्यूज़ एंड व्यूज़ from the legal matters program कानूनी मशवरे और आपसे ये कहेंगे इंशाल्लाह we will be talking about the domestic violence which is a very important issue जो बहुत सारे यहाँ families आ गए जिनकी marriages break down हो चुकी हैं उसका हम ज़रा मज़ीद इसमें डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम में अन एंटरप्रेन्योरल वीज़ाज़ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे असाइलम एंड डिपोर्टेशन सो अगर आपके पास ये क्वेश्चंस हैं तो पहले से आप तैयार रखें एंड एनी मैटर रिलेटेड टू लीगल इशू विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक एंड ऑब्वियसली गिव यू द गुड एडवाइस तो आप सबका शुक्रिया फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमारे यही होता है तो हम इंजॉय करते हैं अपने व्यूज़ के साथ अपने जो कॉल्स आते हैं उनको बताते हैं हाउ टू व्हाट दे शुड बी डूइंग एंड इट्स अ टू वे प्रोग्राम where we share with yourself. So again, thank you for watching Hidayat TV. Thank you for watching Legal Matters. Or inshallah next week ijazat hai. And myself and my team will be back to discuss legal issues, legal matters. Shukriya. Khuda Hafiz.